Hi friends, welcome to Ignited Minds. Today in this video we are going to understand the question answer from your economics section class 10 NCERT. We are going to cover chapter 5 and the name of the lesson is consumer rights. So let's start the exercise. The first question is, why are the rules and regulations required in the marketplace? Now rules and regulations की तो हमें हर जगह ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज वो डिसिप्लिन ही नहीं रहेगा. बट वाई डू वी नीड रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द मार्केट प्लेस? तो मार्केट एक ऐसी जगह है जहां प्रोड्यूसर्स हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं, सेलर्स हैं जो प्रोडक्ट खरीद कर बेचते हैं, एंड कंज्यूमर्स है जो इन प्रोडक्ट्स को मार्केट से खरीदते हैं. So rules and regulations are required in the marketplace to protect the consumers against exploitation by the producers and sellers. क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स कहीं अपने फायदे के लिए कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट ना करें. शॉपकीपर्स कभी कम तोल देते हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा चार्जेस लगाते हैं, आजकल तो वेट के नाम पर भी एक्स्ट्रा टैक्स हर जगह लेते हैं. कभी कभी एडल्टरेटेड या डिफेक्टिव या एक्सपायर्ड गुड्स आर सोल्ड टू द कंज्यूमर्स. एडल्टरेटेड यानी मिलावट, जैसे दूध में पानी डालकर बेचना, ब्लैक पेपर के बजाय पपाया सीड्स बेचना, एक्सेट्रा. सो रूल्स आर रिक्वायर्ड. नाउ प्रोड्यूसर्स ऑफन इंडल्ज इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड प्रोवाइड फॉल्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस. जैसे झूठी तसल्ली देते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट लेकर जाओ, सर्विस की तो चिंता ही मत करो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वापस देकर जाना वगैरह वगैरह. बट एक बार प्रोडक्ट खरीद लिया तो दे डोंट कीप देयर प्रॉमिस. सो दैट इज व्हाई वी नीड रूल्स. मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स आर अनअवेयर अबाउट द राइट्स एंड आर ऑफन डिसीव्ड बाय द सप्लायर्स. नाउ बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ऐसे होते हैं जो इलिटरेट है, पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो दे आर अनअवेयर ऑफ द राइट्स एंड सप्लायर्स इस बात का फायदा उठाकर उन्हें मिसगाइड करते हैं. सो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स from being cheated by the suppliers, rules and regulations are required in the marketplace. Now the second question, what factors gave birth to consumer movement in India? Trace its evolution. Now पहले के टाइम में there was no legal system available to protect the consumer from exploitation. पहले के टाइम में अगर कंज्यूमर कोई एक प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो ही विल नॉट परचेज दैट प्रोडक्ट. वही एक ऑप्शन था. Earlier, it was the responsibility of the consumer to be careful while purchasing any product. So अगर consumers को कोई भी product से dissatisfaction रहता है तो they were not able to do anything. So we can say that consumers movement arose due to dissatisfaction of the consumer. Now let's see the factors that led to the consumer movement. It started as a social force and its aim was to protect and promote the consumer. नाउ हमें कंज्यूमर को किससे प्रोटेक्ट करना था? तो अगेंस्ट द अनएथिकल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से हमें कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना था. नाउ इन 1960s में एक्सट्रीम फूड शॉर्टेज, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड एडिबल ऑयल, इन सब चीजों की वजह से कंज्यूमर मूवमेंट एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमारे सामने आया. 1970s तक तो वो इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ गया था कि दे वर एंगेज्ड इन राइटिंग आर्टिकल्स एंड एग्जीबिशंस रिगार्डिंग कंज्यूमर अवेयरनेस. इन लोगों ने कंज्यूमर ग्रुप्स इतने ज़बरदस्त बना लिए थे कि जिनका काम था कि रेशन की दुकान में या इवन पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट के ड्यूरिंग में ओवर क्राउडिंग की वजह से कोई भी प्रॉब्लम ना हो. सब जगह में इतनी अवेयरनेस शुरू हो गई थी कि 1986 में तो इंडियन गवर्नमेंट इनेक्टेड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, दैट इज कोपरा. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नीड फॉर कंज्यूमर कॉन्शियसनेस बाय गिविंग 2 एग्जांपल्स. तो नेचुरली जागरूक तो होना ही चाहिए. कॉन्शियसनेस यानी जागरूक होना. सो जागरूक तो होना ही चाहिए सो दैट वो सेलर्स एंड प्रोड्यूसर्स की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का विक्टिम ना बन जाए. Now, consumer consciousness is being aware of your rights as a consumer while purchasing any goods or services. Now, कब हम unfair trade practices के victim बनते हैं? Sometimes sellers sell us expired products, जैसे कि medicine, कोई perishable product, etc. So these things are injurious to health and so a consumer should be conscious while purchasing any goods. Sellers increases the price of the goods. समटाइम्स जो MRP है उससे ज़्यादा प्राइस लेते हैं या तो कभी कभी डिफेक्टिव गुड्स थमा देते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एंड सो अ कंज्यूमर शुड बी अवेयर. सो दिस एग्जांपल्स सजेस्ट दैट देयर इज अ रियल नीड फॉर कंज्यूमर कॉन्शियसनेस. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, मेंशन अ फ्यू फैक्टर्स व्हिच कॉजेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर.
तो मार्केट की अगर हम बात करें तो द प्रोड्यूसर्स एंड द सेलर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस एनी गुड्स और सर्विसेज, कितनी भी क्वांटिटी में वे प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड प्राइस में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं. दे कैन इंक्रीज और डिक्रीज द प्राइस अकॉर्डिंग टू द डिमांड. नाउ एज अ कंज्यूमर मैंने जो पैसे खर्च किए हैं वो वसूल तो होने ही चाहिए एंड इट शुड बी वर्थ द मनी. एंड ऐसा अगर नहीं होता है तो मैं कह सकती हूँ कि आई एम बीइंग एक्सप्लॉइटेड. कभी कभी द सेलर इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड डिमांड्स मोर देन द MRP. At that time also the consumer is being exploited. So let's see the factors that causes exploitation of the consumer. या तो हम कह सकते हैं let's see the reasons for the exploitation of the consumer. तो एक तो limited and false information about the product is given to the consumer. As a result, the consumer makes a wrong choice and suffer loss. For example, producers हमें कहते हैं कि use this shampoo and your hair will be like Aishwarya Rai. But actually अगर देखा जाए तो it all depends on hereditary, climate, etc. But हम उसमें फंस जाते हैं. Sometimes the product is different in color, size, weight to what is advertised. जैसे कि Amazon या तो फ्लिपकार्ट में कभी कभी होता है. देन फ्री डिलीवरी इज एडवर्टाइज्ड बट एक्चुअली इट इन्वॉल्व्स सम सॉर्ट ऑफ चार्जेस. Sometimes the advertisement misleads us. Suppose they say the hotel is located on the beach and is the ideal place for a quiet holiday, but it's exactly opposite. Beach is on a cliff and it is a regular meeting place for local youths. Then low literacy leads to exploitation as they do not have complete knowledge of the product due to illiteracy and they are perfect target of the producers to exploit. For example, आजकल काफी सारे लोग आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं. ऐसे में if we are not an alert customer then the agent may take our advantage and exploit us. वो हमें ललचाएंगे कि इतने पैसे भरो एंड तुम्हारा जॉब फिक्स हो जाएगा. ही विल टेक द मनी फ्रॉम अस एंड जब हम वहां जाएंगे तो वहां कुछ भी नहीं मिलेगा. Then limited competition. So lack of competition leads to exploitation of the consumer. If there is one or a few producers of a product, there is possibility of manipulation in price and supply. For example, railways. Railways are provided to us by the government. So we can say that they are a monopolist, which means private companies are not allowed to run railways. However, उनके टिकट्स रीजनेबल होते हैं बट फिर भी. Then shortage of supply. Due to underdevelopment of industry, there is shortage of this gives rise to hoarding, black marketing and price rise. And they are perfect target of the producers to exploit. So these are few factors that gives rise to exploitation of the consumer. Now the fifth question, what is the rationale behind the enactment of Consumer Protection Act in 1986? Now rationale यानी reasons या तो belief. Enactment yani the act of making something as a law. So the reason behind the making of Consumer Protection Act as a law is to protect the consumer against unethical and unfair trade practices. It recognizes the consumer's right to be informed, right to choose, right to seek redressal and right to represent himself in consumer courts. So इस एक्ट के अकॉर्डिंग एज अ कंज्यूमर हमें ये राइट दिया जाता है कि कंज्यूमर कोर्ट में हम एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आवाज उठा सके. सो ये एक्ट बनाने का जो मेन रीजन था दैट वाज प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. सो इसकी वजह से क्या होता था कि जो भी अनफेयर ट्रेड या बिजनेस फर्म्स या इवन गवर्नमेंट को ये लोग ये एक्ट के थ्रू प्रेशराइज किया जाता था to correct their business conduct which may be against the interest of the consumer. Now the sixth question, describe some of your duties as a consumer if you visit a shopping complex in your locality. तो एज अ कंज्यूमर वी शुड ऑलवेज बी अलर्ट. सो जब भी हम किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं एंड अगर हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो first we should check expiry date of that product. Second, we should not pay more than the maximum price printed. Third, we should always ask for cash memos. Fourth, ensure that seller is not selling duplicate or defective product. Fifth, register a complaint with consumer forum if the dealer refuses to take the responsibility of the goods. Sixth, we should have the knowledge and skill to become a well informed consumer. Seventh, we should also look for the
quality and guarantee warranty of the product. 8. Check the measurement of the goods and purchase only things marked by ISI, EGMARK, etc. So with this we come to an end of the first 6 questions of the exercise. Hope it helps you. Thank you.